अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे? और मैं शगुफ्ता अली हूँ कैश नॉलिंग सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। और गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड JavaScript। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज, यू नो वेरी वेल, जो मेरे नॉर्मली यूज़र्स हैं दोनों, दे नो हाउ टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले index.html वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द बेसिक फाइल। इसी के साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर वन हिज फॉर योर formatting is a CSS. Move on, the next is index.hjs for the JavaScript file. So interlink all the file, provide here the emit tags. Now here is the tags. I just zoom in. इसी के साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट द इंटरलिंक फाइल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिंक क्रिएट कर लेंगे अमंग HTML CSS and JavaScript. So here is the file of index.css relation for the style sheet. So here is close. इसी के साथ we are going to implement here the JavaScript file. So basic structure is very compulsory when you start your work. So बहुत important है कि जब भी आप basic structure open करेंगे, you should need to implement and connect all the files with each other. Then you can easily implement your data what you are gonna implement. तो हमने यहाँ पर देखा 3 फाइल्स हमने डिज़ाइन करी एंड दैन वी आर गोइंग टू इंटरलिंक विद ईच अदर। तो मूव ऑन द बॉडी एरिया। सबसे पहले HTML पे काम करेंगे। इसी के साथ साथ गाइस, आई शो यू द प्रीव्यू, दैन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट टुडे। थोड़ा सा प्रीव्यू को रिसाइज कर देते हैं। सो हेयर इज़ द बॉडी एरिया एंड दैन वी आर गोइंग टू कंप्लीट हेयर द कैनवास। सो जैसे ही कैनवास क्रिएट करेंगे, इम्प्लीमेंट हेयर द ID. So you also provide here the name of canvas and then implement here जो अच्छा canvas क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर implementation करनी है। तो जो ड्राइंग एरिया पता होगा, लाइक जिस तरह से पेंट एरिया होता है, वो हम आज डिज़ाइन कर रहे हैं कि अपनी एक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं आप, ड्राइंग एप्लीकेशन। सो बहुत ईजी सा मेथड है। वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड शेयर विद यू। हाइट अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विद एंड हाइट डिपेंड ऑन यू। जो भी क्राइटेरिया आप रखना चाहते हैं उसके हवाले से यू शुड नीड टू प्रोवाइड हेयर विद एन हाइट। ठीक है जी। नाउ बैक ऑन द कैनवस। इसी के साथ इम्प्लीमेंट हेयर द टूल बार क्लास। तो यहाँ पर मैं टूल बॉक्स, बल्कि टूल बॉक्स रख देती हूँ, नॉट द टूल बार। इसी के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर सो बटन। ID का नाम मैं डिक्रीज रख देती हूँ। इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अनदर, so depend on you. I should provide here the minus button, otherwise if you want to put here some here tags here, so you can also implement some tags. Otherwise if you never apply, it's totally depend on you. So now we are going to implement here this pen tag, and after that I also provide here the ID. His name is size, what you want to implement, इंक्रीज। अच्छा, यहाँ पर ब्रश का साइज़ जो भी डिसाइड करते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप इजीली उसको डिसाइड कर सकते हैं। आई जस्ट गिव हियर द 10। इफ़ यू इम्प्लीमेंट मोर देन 10 दैन यू कैन ईजिली ऐड इट। ठीक है जी। इसी के साथ मूव ऑन द नेक्स्ट। आई जस्ट री ओपन दिस प्रीव्यू। ओके एंड आई ओके मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर द बटन। Again implement here the ID क्योंकि हमने ऊपर टॉप पे डिक्रीज लिया। then we are going to add here the increase, and then we are provide here the plus button obviously for the increase.
sorry. So move on the next. So after that button, we are going to so here is input, type, color, and also implement here the id is also named as the color, and then you can close it. After that, implement here again the button id. So here is the id, and then implement here the clear. So clear में आप यहाँ पर whatever you want, I just put here the X. Otherwise, if you want to give another tag, thanks to Adrian for joining. So guys, here is our HTML is finished. Move on the CSS. तब हम आते हैं अपनी CSS पे वर्क पे, and then we are going to import. अच्छा, यहाँ पर अगर आप कोई भी लैंग्वेज या फॉन्ट इंपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर रहे, हम रैंडमली इम्प्लीमेंट कर देंगे. इफ यू वांट टू इंपोर्ट तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो. सो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर इज़ द बॉक्स साइजिंग. So implement here the border box. Move on the next. Sorry. So after that, implement here the body. So background color. Okay, fine. After that, the font family. Here is sans serif implement कर देते हैं. Display is flags. Flags direction is column. After that, implement here the line item. They are colon centered. Justify content as well as centered. After that, implement here some height. So here is the height. Implement here the 100 VH. And after that, implement here the margin is 0. Okay. Move on. The next is the canvas. So अब हम canvas की setting करेंगे, then you can see. So implement here the border to px solid, and then implement here the still blue. Let me check what are the preview, and I'm gonna share with you. Look like that. Now you can see easily. Here is the background and you can see the button is here. क्योंकि कैनवास लंबा है और अभी responsive नहीं है, that's why आप देख सकते हैं ये इतना डिज़ाइन हो गया है. Move on the furthermore criteria, back on the CSS. So after that, implement here the toolbox. So implement here the background color again is the still blue. So implement here the border as well as 1px solid and style blue. After that, display, cause we are going to require in a responsive, so implement here the width also at 04 px. After that, we are going to implement here the padding is
1 rem. Okay, move on the next. Here is the toolbox. Sorry. So implement here toolbox, then greater than. So implement here the background color. Here is white. After that, implement here the border. So I close this. Done. Display is align flags. After that, here is the align item centered. Justify content as well as centered. Here is the font size. It's 2 rem. After that, implement here the height is 50 px as well as width is 50 px, and after that implement here the margin is 0.25 rem. Here is the 205. If I show you the preview, then you can easily, यहाँ पर असल में प्रीव्यू शो नहीं हो रहा है, दैट्स वाई मैं शो भी नहीं करवा रही, क्योंकि कैनवस बहुत बड़ा है और यहाँ आप देख सकते हैं कैनवस की जो रेंज है वो उससे बाहर जा रहा है, ठीक है ना. तो here is the issue, that's why I never share you the background. So preview, so implement here the padding is 0.25 rem. स्पेस नहीं है, that's why. इसी के साथ साथ implement here the cursor become a pointer. Okay, after that guys, we are going to implement last on the least formatting. Here is the toolbox. So the last child, press the margin left, auto. So guys, यहाँ पर हमारा CSS ख़त्म हो जाता है, and then implement here the JS. So let's move on the JavaScript. सबसे पहले construct कर. So construct is canvas equals to document dot get element by id. So here is the name of canvas. So move on the next. Again we are going to implement here construct increase button. Do you remember हमने यहाँ पर increase button लिया था, equals to document dot get element by id. Here is the increase. Okay, after that implement here again construct decrease btn equals to document dot get element by id, and now you can decrease.
After that, again construct size all. Here is again document dot, तो यहाँ पर again get element by id. So again यहाँ पर मैं size mention कर देती, and then again close this, again construct color equals to document dot again get element by id. So यहाँ पर अब हम color mention कर देंगे. Close this. After that last on the least button हमारा clear था. So again construct clear equals to document dot get element by id. So here is the clear. Now close this. ठीक है जी. इसी के साथ हम इसके कंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करते हैं. अगेन last on the least try again. Construct equals to canvas dot get contacts in a 2D. Implement here. Close this. So अब आते हैं guys let size टेन. अब डिपेंड करता है इक्वल्स टू 10 रखा है आपने, आप जितना चाहे रख सकते हैं. सो let is pressed equals to false. So the color l dot value equals to black. So let color by default black रहेगी, otherwise if you want to change then आप change कर सकते हैं. dot value. So यहाँ पर suppose करते हैं let x and let y. ठीक है जी. So move on the next. So the canvas dot add event listeners. Implement here the event mouse down. अब यहाँ पर हमने माउस डाउन दिया. आपकी डाउन डिपेंड करता है, आप जो भी देना चाहें वो स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर सकते हैं. So here is the implement is press equals to true. So implement here some condition x equals to dot offset on x. ठीक है.
and again implement here y equals to e dot offset on x. ठीक है जी, dot. Now close this. Next, document dot add event listeners. Again implement here the mouse up. So again यहाँ पर x equals to undefined, सॉरी पहले मैं स्ट्रक्चर लिखना भूल गई, is pressed equals to false, and again implement here on the y as well is undefined. ठीक है जी, okay, it looks like that. Move on the next structure. Move on the next. Here is again canvas dot add event listener. So here is the mouse move. So here is the some another procedures then you can use if you want to movement or animated any situations. तो यहाँ पर if you want to implement here such conditions guys, तो उसके बगैर जाहिर सी बात है. तो यहाँ पर if express दो conditions implement करेंगे. So construct x2 equals to e dot offset sorry I just put here offset on x-axis. इसी के साथ सेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट. जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली बहुत ध्यान से राइट डाउन करना पड़ती है. अगर कहीं से भी आप कोई भी एरर बग आ जाएगा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको आपको डिक्लेयर करना या उसको आउटसाइड द बॉक्स ऐड करना. इसी के साथ मूव ऑन द नेक्स्ट. हियर इज द ड्रॉ सर्कल. x2 xy sorry y2. Move on the next. Draw line. Here is again x comma y comma x2 comma then y2. ठीक है जी. Here are the all possibilities. X equals to x2 and again implement here the y equals to y2. So now move, you can outside the box. Here is another function we are going to call function. अब हम draw circle पर आ जाते हैं. So यहाँ पे मैं पैरामीटर्स पास कर देती हूँ x और y. ठीक है जी. Move on the next. ctx dot begin path
So again ctx dot arc, here is x, y, size 0, math dot pi multiplied by 2. Okay, move on the next ctx तो यहाँ पर ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हमारा फंक्शन रन करने के लिए यहाँ पर हमें CSS प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ी हैं. Then implement here the ctx dot fill, sorry. So now here is close the function, draw here the draw line function another. So here is the function draw line, again implement here the x1 value small में comma y1, so x2, and then implement here the y. They are the parameters you are going to implement here. So ctx dot begin path, then again ctx dot move to on x1 comma y1, then after that implement here the again ctx डॉट, ये सारी सिचुएशंस हैं जो कि आप डिज़ाइनिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं. line 2 again x1 then y1, so after that implement here, बल्कि मैं इसको y1 और x1 ऊपर ले लिया है, then implement here the 2. okay, after that ctx dot stroke style equals to color, again ctx dot line, so implement here the line width, स्ट्रोक का स्टाइल हो गया, दैन लाइन की विड्थ हो जाएगी जो कि इक्वल्स टू साइज इम्प्लीमेंट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, एंड देन ctx डॉट stroke then close this. ठीक है जी. Now move on the next. Another function is the update. So update size on screen. So okay, now here is the complete function, update size on a screen. So here is the size l dot inner text equals to size. Okay, move on the next. Implement here the increase button dot add event listeners. अब यहाँ पर आपने
क्लिक का जो इवेंट है वो राइट डाउन करना है, कॉमा, so here is size increment 5. After that, if size greater than equals to 50, then so size equals to 50. ठीक है guys, move on the next. अपडेट साइड ऑन स्क्रीन जो फंक्शन था उसको आपने यहीं पर ही कॉल करा देना। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। हम आते हैं अपने इंक्रीज बटन पे, डॉट एड इवेंट लिस्टनर्स, अगेन इम्प्लीमेंट हेयर क्लिक का प्रोसीजर राइट डाउन करना है, then again same method increment and then implement here the functions. So again put here the size -6 दे रही हूँ, आप भी मैं यहाँ पर बल्कि 5 दे देती हूँ। अगेन इफ पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉज डिक्रीज और इंक्रीज है, साइज लेस देन 5, सो इक्वल्स टू साइज 5। ठीक है जी। सो यहाँ पर अगेन प्रोसीजर को कॉल करेंगे, अपडेट ऑन स्क्रीन फंक्शन को। ठीक है जी। सो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कलर, लास्ट ऑन दी लीस्ट, dot add event listeners, so implement here change so the color equals to event dot target dot value। ठीक है जी। and then after clear EL, again dot add event listeners, again प्रोसीजर क्लिक का इम्प्लीमेंट करेंगे इवेंट, comma, after that ctx dot so clear react, not here the procedure, मैं इसको react कर देती हूँ। सो ओपन करते हैं, इसकी वैल्यूज ऐड करते हैं। You should need to implement here another property. So here is a canvas dot width dot implement here the comma, and then canvas dot height. Here is our today's lecture, guys. So here is the procedures. So now इसको run कराते हैं, then share the final result. So now here is the final result, guys. आप देख सकते हैं easily कि आपका एक कैनवास यहाँ पर रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, आउटलाइन को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
हेयर इज़ आवर कैनवस। अब यहाँ पर इफ़ यू वांट टू ड्रॉ एनीथिंग तो यू कैन यहाँ से इसकी जो टिप है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको फिनिश कर सकते हैं। आप यहाँ पर और नंबर पुट करना चाहें तो यहाँ देखिए इसकी टिप स्मॉल हो गई है। इसी के साथ साथ इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड तो यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइट है डार्क कर आपकी टिप का कलर जो है वो चेंज हो गया। नाउ यू कैन सी, सो यू कैन ईजिली ड्रॉ एनीथिंग इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ दिस कैनवास। तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अब बैकग्राउंड कलर देना इसको और अट्रैक्टिव करना है, टोटली डिपेंड ऑन यू। सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। लाइक करना, गुड कमेंट पास करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।